Students, today we will learn ascending order. See, here are some pizza slices. Here the number of pizza slices is 1. It is delicious pizza, okay? Here the number of slices is 3. And here the number of slices are 6. So for ascending order, we will move from small number of slices to bigger number of slices, okay? Here the number of slices is 1, so 1 will come first, and here 3 is greater than 1, so 3 will come after 1. Now 6 is greater than 3, so after 3 6 will come over here, okay? So we have arranged these pizza slices in the ascending order, or we can say ascending order means going up, going from smaller number to bigger number. We are moving from smaller number to bigger number. 1 2 3 4, we are going from smaller number to bigger number. आप लोगों ने एक्टिविटी भी की है, उसमें आप लोगों को समझ में आया होगा that what is ascending order, okay? So now we will see how to write the ascending order for 3-digit numbers. See, here a question is given, that is, here the number is 123, 235, 237 and 540. So for writing in ascending order we have to compare the numbers. और ascending order में हमने क्या सीखा? small से big. तो सबसे पहले सबसे स्मॉलर नंबर आना चाहिए. तो इस हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर स्मॉलर है? वी विल कंपेयर द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर. See, here 1 2 2 5. We all know that 1 is smaller than all the numbers. So सबसे पहली प्लेस पे कौन सा आएगा? 123. हम पूरा नंबर लिखेंगे, ओके? एक डिजिट को ही कंपेयर करेंगे. Now comma, we will place a comma, okay? This is the answer, this is the question. And now look over here. Here also 2 is given, here also 2 is given. Now and here 5 is given. As we all know, this is greatest among all the numbers, so we will 540 will come at last. Now the confusion is between these numbers. 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट प्लेस की तरफ जाएंगे. 3 और 3, यहाँ पे भी दोनों नंबर सेम है, so we will see the next digit, okay? Here it is 5 and here it is 7. तो कौन सा स्मॉल हुआ? 5 या 7? Yes, 235. 5 7 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 235. अब इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, पता ही है, 237 और सबसे लास्ट में आएगा 540. वेरी गुड. ये तो वैसा कि वैसा ही लिखा गया, लेकिन हमें ऐसे ही कंपेयर करना होता है. नाउ लेट अस सी एन अनदर. प्लीज टेल विच नंबर विल कम फर्स्ट. वी विल जस्ट कंपेयर द फर्स्ट डिजिट. 1 3 5 4. सो स्मॉल टू बिग जाना है हमें असेंडिंग में. तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 191. लेट अस राइट 191. नाउ आफ्टर 191 कौन सा सबसे छोटा है? 4 5 या 3? 314. वी विल राइट 314. नाउ विच नंबर इज स्मॉलर? 409 और 506? सी, फर्स्ट डिजिट 4 इज लेस देन 5, so 409 will come first. Then the greatest number is 506. In this way we write the ascending order from small to big. Is it clear to all of you? Now let us learn the descending order. Descending order means moving from big to small. See, here little birdie wants to eat the grains, so she will move from big number to smaller number, okay? She is here, she will move downwards, okay? For how many steps she has to jump? She has to jump 4, then 3,
2, 1. Then she will meet her friend and eat the grains. Okay, this is the descending order from greater number to smaller number. Is it clear? So here some question is given. This, as we know that descending order means moving from big to small. So for writing in descending order, what we will do, we will compare the first digit of each number. 2, 9, 3, 5. Which number is greater among this? See, 9 is greater among all the number we have marked. Okay, so 985 पहले आएगा क्योंकि इनकी सबकी सेकेंड डिजिट सेम नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट ग्रेटर नंबर? दैट इज़ द 519. ओके, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे. 519. इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 2 और 3 में कंपेयर करो तो 3 बड़ा है, तो 300 को लिखेंगे. नाउ द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 296. Is it clear to all of you? Now let us see the next question. Here it is the next question. See what we will do. We will see the first digit. Here also 1. Here also it is 1, 1, 1. So we will move towards next digit. Here it is 5. Here also 5. Okay, but here it is 6 and it is 7. So which number will be greater? 172. We will write 172 over here क्योंकि 7 इन सब में सबसे बड़ी डिजिट है. ओके, अब यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट कौन सी डिजिट आएगी? 6. ओके, तो वी विल राइट 168. सिर्फ हम डिजिट चेक करते हैं और पूरा नंबर लिख देते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट, these two digits are equal. Now we will see the next digit. Okay, 6 and 9. So which digit is greater, 6 or 9? 9. So this number will come first. 159. Then the smallest number will be 156. This is the descending order from big to small. Is it clear to all of you? From big to small.